السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو کیفے نیوز. میں ہوں آپ کی میزبان شرمین علی. ناظرین، آج ہم آئے ہوئے پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس کولمبین کلچرل فیسٹیول کو وٹنس کرنے کے لیے. اس کلچرل فیسٹیول میں پاکستان کولمبین نان ریزیڈنٹ ایمبیسڈر ٹو پاکستان آئے ہوئے اس کو انوگریٹ کرنے کے لیے، اور آنے والے دنوں میں کولمبین ایمبیسی پاکستان میں ایک نئی ایمبیسی کا آغاز ہوگا. تو اس کی وجہ سے کلچرل فیسٹیول کیا جا رہا ہے تاکہ پاکستانی قوم کو، پاکستانی عوام کو دکھایا جائے کہ ہمارا کولمبین کلچر کیا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں امپورٹنٹ ہیں. فار ایگزامپل ایک آرٹ ایگزیبیشن کیا گیا ہے جس میں اسپیشل طور پہ ایمیزون جنگل کی بایو ڈائیورسٹی اور فلورا اور فونا، اس کے پودے اور پرندے اور جانوروں کو ڈسپلے کیا گیا جو بہت ریئر اسپیشیز ہوتی ہیں اور جن کو پرزرو کرنے کی دنیا میں بہت ضرورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک فلم بھی ڈسپلے کی جا رہی ہے جو کولمبیا کی نوبل پرائز ونر کے بارے میں ہے. اور اس کے ساتھ کولمبیا کی ایک خاص ان کا ڈانس ہے جس کا نام ہے سالسا ڈانس، اس کی بھی کلاسز ہوں گی اور 7 فلمز دکھائی جائیں گی. تو آئے ہم آپ کو دکھاتے کولمبین کلچرل فیسٹیول ایٹ پاکستان نیشنل کاؤنسل آف دی آرٹس. ویورز، اب ہم بات کریں گے ڈائریکٹر جنرل PNCA جمال شاہ صاحب سے آج کی تقریب کے بارے میں. تھینک یو سر فار جوائننگ اس. تھینک یو جی، تھینک یو. سر، یہ مجھے بتائیں کہ PNCA میں اتنے امیزنگ ایونٹس آپ ہولڈ کر رہے ہیں، تو آج کا جو ایونٹ ہو رہا ہے یہاں پہ کولمبیا کا اباؤٹ ایمیزون جنگل کا آرٹ ایگزیبیشن اور ایک فلم بھی ڈسپلے ہوگی، اس کے بارے میں آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ آج کا جو اوکیزن ہے دیٹس ویری امپورٹنٹ فار اس، اس لیے کہ کولمبیا کے ساتھ ہماری کوئی بھی انٹریکشن پہلی بار ہو رہی ہے. کولمبیا کے جو ایمبیسڈر ہیں وہ خود ایک بہت ہی زبردست رائٹر ہیں، اینڈ آف کورس مارکس کا ملک ہے جس میں بہت ساری سملیرٹیز پاکستان کے ساتھ ہے. تو ان کی کچھ فلمیں، ڈاکومنٹریز ہم دکھائیں گے اور ایک ایگزیبیشن ہے فوٹوگرافس کی جو پہلی بار پاکستان میں ہو رہی ہے، PNCA میں ہو رہی ہے. اینڈ وی آر ویری ہیپی کہ ہم لیٹن امریکن کنٹریز کے ساتھ انٹریکٹ کر رہے ہیں. ویورز، اب ہم کولمبیا کے ایمبیسڈر سے گفتگو کریں گے. ہز ایکسلنسی مسٹر وان الفریڈو پینٹو آج کے ایگزیبیشن کے بارے میں وہ بتائیں گے اور کولمبیا کے بارے میں چیزیں بتائیں گے اور پاکستان اور کولمبیا کی ریلیشن شپس میں مزید کتنی ترقی چاہتے ہیں اور کیا اس میں حاصل کرنا چاہتے ہیں. یور ایکسلنسی، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us on Cafe News. Thank you for the opportunity. Welcome to Pakistan, and we understand that you're starting a new mission in Pakistan. Very soon you're starting a new embassy here. So when that does start, what do you hope to achieve with Pakistan and the relations between Pakistan and Colombia once you open the embassy and come as a new ambassador? In fact, the relations between Pakistan and Colombia have many decades. So that happens from 2 years ago is that me as ambassador of Colombia resident in Turkey, I am the responsible for covering also Pakistan. So now I am the new period as non-resident ambassador but totally responsible for Pakistan international approach with Colombia. And what happened that in these 2 years the relations has taken extraordinary intensity. So we have a
very comfortable political relation, a very in a communion process of the economical relations, and we are now doing the first week of Colombia in Pakistan here in Islamabad. Right, and what would you like to tell our viewers and the Pakistani public about Colombia itself? Because, you know, there's not that much familiarity about your country. So what would you like us to know about it and, you know, the way the people are over there in your country and what's special about it? So it is interesting because the one big problem in this process of constructive relations is that the ignorance in Colombia about Pakistan is big. And sorry to say, the media in general of the people don't know very much about Colombia. So Colombia is a 50 million country in an extension of more than 1 million square kilometers. That's a long democratic tradition and a rich culture. And it's also a country that has responsibilities that we are showing in this week in Pakistan. For example, today we are inaugurating the exhibition of pictures about the Amazon River. Colombia is one of the countries that belongs to the Amazon Rim, and the Amazon is important for the people in Pakistan to know that it is 1/5 of the total soft water that is in this planet. So the caring, the diversity, and the good environment of the Amazons is not a problem of Colombia or Brazil or Peru or Ecuador. It's a problem of the world. Today we present pictures about fauna, flora, and environment in the Amazon area, calling the people to have the responsibility in protecting and sustainable using methods of practice in agriculture and forestry to preserve the treasure of the Amazon to the world. In the same way, we are in this week presenting the tremendous result of the 4-year process of dialogue between the terrorist organization of FARC and the government of Colombia to reach the peace agreement in our country. As Pakistan, Colombia has had a long period of conflict, and now we signed the peace, and we are living like a sunrise of the peace in the country, and we are doing many efforts in peacekeeping, in peace building, and post-conflict strategy, and there are many opportunities for investment, trade, and economic relations between Pakistan and Colombia. Yesterday, in the Islamabad Institute of Strategic Studies, we present a vision on our process of peace and the possibilities in post-conflict period to intensify the relations between Pakistan and Colombia. In this week also, tomorrow, I will offer a special launch for entrepreneurial community and leaders of the private sector in Pakistan to try to increase the trade and investment. And in fact, now we have the first company of Colombia that is participating in consulting of engineers in different projects in this wonderful country. Also, during the activities of this week, we have a cinema cycle. In a few minutes, we are presenting here in the Council of Arts the documentary on the life of our Nobel Prize, Gabriel Garcia Marquez, who is the author more well-known in Pakistan, but translated to Urdu. But our aspiration is that the GAO, as we used to call our Nobel Prize, be more and more loved by the people in Pakistan and our full literature. As a writer, I hope to also reach the hearts of the people in Pakistan in a short term. And the new ambassador of Pakistan to Brazil, covering Colombia, is also a writer. So our cultural interchange is going to increase at the point that tomorrow and day after tomorrow, we will do a workshop on salsa dancing style
with our cultural attaché, who is a professional dancer of salsa, and the people of the Council of Arts and the students, professors, and ballet and classical dancing in Pakistan. This is the demonstrations how we are covering exhibition, conferences on economy, conference of peace process, the responsibility in biodiversity, dancing, music, literature exchanges. In this first week of Colombia in Pakistan, that I invite all the tele-audience of your prestigious channel to come to the Institute, to the Council of Arts of Islamabad to appreciate this first week of Colombia in your beautiful country. That's wonderful, and I think that, you know, the public will really enjoy the salsa lessons a lot. And also, you know, it's such a rich, diverse culture that you've got. I'd like to go back to when you were speaking about the Amazon jungle, because it's unique to very few countries, and it's literally like the lungs of the earth. That's where you're having, you know, the forest itself is producing, it's mitigating the effects of the greenhouse effect and global warming. So what would you like to say about that? So the common responsibility, if Amazon continues losing millions of trees, if Amazon continues to be exploited in an irrational manner, not sustainable manner, and if the people of the world cannot understand that it's a common responsibility, we are going down and down and down with terrible consequences for all. So what is the, sorry to interrupt, but what is the government of Colombia at the moment doing to preserve the Amazon? So we belong to the Association of Countries of the Amazonian, and we have the plans with the communities, with the preserving the culture of the jungle inhabitants, communities, ethnical groups. We have the sustainable strategies to apply for fishing, for using the river. The river is like an ocean. So, and also showing to the world. In this exhibition, we are presenting the short story of one artist of Colombia that has taken more than 20,000 pictures doing the thousands of kilometers of the Amazon. And we have made the choice in favor of 23 of them. And we are using text of the famous writer William Ospina, that was the winner of the Rómulo Gallegos Award in Latin America with the novel about the Amazon Conquers process. And you can see in these photographs the rose dolphin, only is one species of Amazons, many insects that are only in this endemism, as we call the characteristics of microcosmos of diversity, and you can appreciate the Victoria regia, the most wonderful, similar lotus flower of this region of the world, and many elements that maybe introject the conscience of the people about the importance of the Amazon. Right. And Excellency, one final question I'd like to know is, between Pakistan and Colombia's relations, what kind of economic trade ties would you like to have with Pakistan? What is the potential for that? It's very big because there are some relations that could be complementary. For example, you are good exporters of textiles and dry fruits and some products typical of this region and this geography. We are exporters of tropical fruits that you don't produce. You are exporters of tea, we are exporters of coffee. You are importers of banana and other tropical fruits that we can provide, pineapple, ananas, and others, avocado. And so we are starting this kind of business. And also, you produce, for example, textiles. We produce textiles, where we can study the options in each case. And in services, you are developing the One Belt, One Route, big macro project, and we want to participate as Colombia, as Latin America in that, as we are starting to do in consulting engineer company in this area. Integral is the name of this wonderful company that is starting to do. And there are many other elements. Yesterday I went to see the famous presenter of TV and the famous faster bowling in cricket. Colombia has no idea, just some
some members of these region diplomatic delegations in Colombia practice, but we want to introduce cricket, and we want to, in sport diplomacy, do some interchange in cycling, in football, the sports that we practice with that you practice hockey and cricket and others. There are many elements in culture that could mean new approaches between literature, also poetry and music are very interesting. So we define with this Council of Arts that the next year, very probably we organize the first week of Pakistan in Colombia and the second of Colombia in Pakistan, introducing new elements and cultural exchanges. That's wonderful. Thank you so much, Your Excellency, and for telling us so much about the background, about your country and about what you hope to achieve with Pakistan and in this cultural week that you've got coming up. And best of luck with, also trying to promote how to maintain or promote peace in the country, like you've had so much experience. Nazreen, हमने पाकिस्तान का दूसरा खिलाड़ी दूसरी विकेट गिर गई उमर अमीन, जिन्होंने 45 रन स्कोर किए। अच्छा और उम्दा खेल पेश किया आज के इस मैच में। इन्होंने पाकिस्तान की दूसरी विकेट 91 रन के मजमूई स्कोर पर गिरी है। और आपको बताते चलें कि इससे पहले आउट होने वाले जो बैट्समैन थे वो फखर जमान थे, और अब उमर अमीन जिन्होंने बड़ा अच्छा खेल पेश किया, लेकिन अब ये 45 रन बनाकर आउट हुए हैं। 3 चौके और एक छक्का इन्होंने अपनी इनिंग्स में खेला है आज के इस मैच में। आपको बताते चलें कि अब पाकिस्तान का मजमूई स्कोर इस वक्त 91 रन है। कजाफी स्टेडियम लाहौर से आपको ये लाइव मनाज़िर दिखा रहे हैं। पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए एक बड़ा दिन है। उमर अमीन 45 रन बनाकर कैच आउट हुए हैं। इससे पहले फखर जमान थे जो कि बोल्ड हुए थे, और इस वक्त पाकिस्तानी टीम का मजमूई स्कोर 91 रन है। श्रीलंकन टीम ने टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला किया, और पाकिस्तानी टीम अच्छा खेल पेश करने के लिए पुरअज़्म है, क्लीन स्वीप करने के लिए पुरअज़्म है इस T20 सीरीज में। और अब भी आपको बताते चलें कि तीसरा पाकिस्तानी खिलाड़ी कोई इस वक्त आएंगे। शुएब मलिक या मोहम्मद हफीज में से कोई इस वक्त बैटिंग के लिए आ सकता है, क्योंकि उमर अमीन 45 रन पर कैच आउट हो चुके हैं। इस वक्त आपको बताते चले कि 91 रन पर पाकिस्तान की दूसरी विकेट गिरी है। उमर अमीन ने 45 रन बनाए और 6 कैच आउट हुए। इस वक्त आपको बताते चलें कि पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच, तीसरा T20 मैच इस वक्त कजाफी स्टेडियम में जारी है। शायकीन क्रिकेट पुरजोश है। 23,000 का कैपेसिटी है इस स्टेडियम की, और यकीनन आप देख रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी कि किस तरह से ये स्टेडियम जैम पैक्ड स्टेडियम है। ढेर सारे लोग मौजूद हैं, न सिर्फ जिंदा दिलाने लाहौर यहाँ पर मौजूद हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आए हैं और ये मैच देख रहे हैं। न सिर्फ पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को सपोर्ट कर रहे हैं, बल्कि श्रीलंकन टीम के सपोर्टर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपको बताते चले कि उमर अमीन इस वक्त कैच आउट हुए थे। उनके अब तीसरे जो खिलाड़ी आए हैं वो शुएब मलिक आए हैं। देखना है कि अब ये किस तरह का खेल पेश करते हैं। पहले जो हमने अभी तक का खेल देखा 22.2 ओवर्स का, तो ये काफ़ी अच्छा खेल रहा। अटैकिंग स्टाइल था पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जानिब से, और अटैकिंग स्टाइल का बनता भी है क्योंकि 2-0 की बढ़तरी हासिल है इस सीरीज में। 2-0 की बढ़तरी हासिल है, और अब ये तीसरा मैच है। सीरीज से पहले ही अपने नाम कर चुके हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम, लेकिन देखना यह है कि क्या वनडे सीरीज की तरह T20 सीरीज को भी क्लीन स्वीप करने में कामयाब होते हैं या नहीं। और ये शुएब मलिक ने फेस किया बॉलर को और पहली अपनी गेंद खेली।
come up with some very aggressive batting, would pick his spot, will be able to get a boundary or a six. Just at you all the time, the type of cricketer that you आज का ये दिन जो है यकीनन पाकिस्तानी अवाम के लिए एक बड़ा दिन है और पाकिस्तान में क्रिकेट की तारीख के नए बाब का आगाज भी समझ सकते हैं आपको। श्रीलंकन टीम वही टीम जिसके ऊपर अटैक के बाद, दहशतगर्दी के अटैक के बाद पाकिस्तान के जो खेलों के मैदान थे वो वीरान हो गए थे, लेकिन आज इसी टीम की कोऑपरेशन की बदौलत हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो क्रिकेट के मैदान है ये आबाद हो रहे हैं और पाकिस्तानी आवाम बहुत पुरजोश है। चंद घंटों का ये जो खेल खेला जा रहा है इसके पीछे कई दिन, कई महीने और कई सालों की अनथक कोशिशें हैं। आपको बताते चलें कि श्रीलंकन टीम 8 टॉप टीम्स में से पहली टीम है जिसने पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान में खेलने की ख्वाहिश का इजहार किया और इस वक्त ये मैच खेला जा रहा है लाहौर के कद्दाफी स्टेडियम में। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अंततः यकीनन इसमें काविशें मौजूद हैं और हुकूमत की काविशें मौजूद हैं कि किसी तरह पाकिस्तान में क्रिकेट के मैदान आबाद हो सके और ये काविशें रंग ला रही हैं। ये अंततः में मेहनत जो अरसा दराज की है यकीनन ये इसके असरात और इसकी जो अच्छे असरात हैं, मस्बत असरात, ये भी और ये जो लम्हात लोग देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देखते हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर या इस स्टेडियम में, ये भी अरसा दराज याद रखेंगे। ये 13वें ओवर की 13वां ओवर और 99 रन मुकम्मल हुए। 13वां ओवर भी मुकम्मल हुआ, 99 रन भी मुकम्मल हुए। सरफराज अहमद का कहना है कि 170 से 180 रन का हदफ देंगे श्रीलंकन टीम को। देखते हैं कि अब यह हदफ दिया जा सकेगा या नहीं। फिल वक्त बढ़ते हैं ब्रेक की जानिब, जिसके बाद हाजिर होंगे हेडलाइन न्यूज के साथ। आप साथ रहें। Attending an exhibition and watching it. Viewers, अब हम बात करेंगे डेनियाला से जो कोलंबियन एम्बेसी की कल्चरल अटैचे हैं। डेनियाला, thank you so much for joining us on PTV News. Of course, it's a pleasure to be here in Pakistan. We're most excited for our Colombian festival. Okay, great. And what did the Colombian embassy here in Islamabad what did you want to accomplish by having this cultural week? I mean, it's wonderful to see all this artwork and film and, culture, your dance and everything like that. So what was the aim prior to actually opening an actual embassy in Pakistan? We wanted to encourage the mutual knowledge between people of both of our countries. So we wanted Pakistani people to get to see all that Colombia has to offer cultural-wise. We are a country of partying, of carnivals, of salsa, a happy country. So we want to communicate this through our salsa workshops. We are also the second most biodiverse country in the whole world. So this exhibition exaltates that richness in biodiversity and calls to its preservation as well. And then through the films, we want people to get to know all that cultural values we have in our country. We have a Nobel Literature winner. We have a movie on Gabriel Garcia Marquez. We have a movie on Colombia's biodiversity, it being the second most biodiverse country in the world. And we have The Embrace of the Serpent, which is an Oscar nominee movie. So we also have a very strong cinema production. Not many people know that. We want people to know that. We want people to approach Colombia. And we want to encourage Pakistani people to know more about our country. नाज़रीन, आज हमने आपको कोलंबियन कल्चरल फेस्टिवल दिखाया आज पाकिस्तान नेशनल काउंसिल ऑफ द आर्ट्स में और मुख्तलिफ यहाँ के मेहमानों से भी बात की कि ये फेस्टिवल जो है इसकी क्या अहमियत है। बेसिकली यहाँ के कोलंबिया के नॉन रेजिडेंट एम्बेसडर पाकिस्तान विजिट कर रहे हैं क्योंकि एक यहाँ पे नई एम्बेसी पहली दफ़ा कोलंबिया की खुलने वाली है, तो उसकी वजह से पाकिस्तानी कौम को आगाह कर रहे हैं कि कोलंबिया का कल्चर कैसा है और वहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें। फॉर एग्जांपल एक फोटोग्राफर ने एग्जीबिशन की हुई अमेज़ॉन जंगल के बारे में और उनके नोबेल प्राइज़ विनर के बारे में एक मूवी दिखाई गई है
गैब्रिएला गार्सिया मार्केज के बारे में, और साथ साथ डांस क्लासेस भी दे रहे हैं, कोलंबियन कल्चरल सालसा डांस क्लासेस. सो व्यूअर्स, इस वजह से ये एक बहुत रिच और बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग फेस्टिवल गुजरा, एंड आई होप कि आपने एंजॉय किया हो, एंड इंशाल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे ऑन कैफे न्यूज़. अल्लाह हाफिज़.